Okay, so Jai Gurudev, I have to admit, this is very distracting. Sitting in front of you. So, Rather sitting next to Krishna. well, yeah, no, please. So, I'm okay if you want to shift a little bit. And congratulations again. Thank you so much. Yeah. Big day, big celebration. Yeah, this is my mom. Oh my God! Oh my God! Congratulations! Oh, wonderful! I did not realize that. No, you nahi beta. Yeah, you're the Lakshmi Ma. Madhvi, and Sharu auntie standing this side. Welcome aboard. We have All right, let's start. So that I want to remain in Why Uncle's good books. समय के अनुसार तो समय से शुरू करें, समय से बंद करें, है ना? कहीं भगा ना दे. ना जी ना, ठीक है. I mean, I don't mind turning it on आप लोगों को. 3 minutes. 3 minutes. Automatic. Really? Wow. क्या बात है? Let there be light. In the Bible, Jesus Christ says, "Let there be light," and there's light. It's just, Salil Bhai has his own way. So last time, if you remember, हमने Shama Didi किया, है ना? I used to call her Shama, and then I realized it's Shama. Yeah. वो लोटा पर पानी की बात हुई थी. यावनार्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके भगवदगीता 2nd chapter. तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. और उसके बाद फिर विवाद चला था थोड़ा कुंभ मेला को लेकर के. I think you weren't right. Yeah, there were some interesting juicy conversations after that. But what led to that is just to give some context and bring everyone together. यावनार्थ उदपाने, उन्होंने कहा था कि जैसे समुद्र के तट पे अगर हम गए, समुद्र में एक लोटा भर पानी लेके दिया, जो तर्पण किया, मंत्र कहा, अथवा ऐसे ही डाल दिया, तो समुद्र कोई एक्साइटेड होने वाला, सागर कोई एक्साइटेड होने वाला नहीं कि I got more, now I have more, है ना? एक लोटा भर पानी मिला. अथवा तो एक लोटा भर पानी लेके गए तुम, उसके पास से समुद्र के किनारे गए, तो कोई खींचा नहीं जाएगा, बौखला नहीं जाएगा समुद्र कि यार ये मेरा पानी है, तू कैसे ले जा रहा है. लोटा भर लो, कितना जितना लेना है इतना लेना लो, जितना डालो, क्योंकि उसके पास अपना रस है. पहली बात, उसके पास अपना पानी है, अपना जल है, अपना रस है लिटरली, और असीम है, उसकी सीमा नहीं है, सीमा रहित है, राइट? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड इन अदर वर्ड्स. एंड देयरफॉर the one who has whatever the resource is, whatever is valuable in an unlimited quantity, remains unaffected. If you contribute a little to it, him, her, however, or if you take away a little bit from it, it doesn't matter. Nothing is a big deal. Nothing. Imagine living a life like this. Nothing is a big deal. Just nothing. It doesn't matter, right? But not in a negative way, not in a frustrated way, not in a giving up, abandoned way, but in fact in a very positive way. That it's all good. It's all in an inclusive way, not in an exclusive way. कि अपना बाजू रख दिया. Now I don't care, whatever you do, whatever you want to do, it doesn't matter, because I've got my bank balance, my own home, my own insurance, all that. So I don't care, whatever, right? Or that I'm a Hindu. I mean, it doesn't matter what's happening to Muslims. Not in that way. In fact, in the opposite way. You know, that while everything does affect, when you put a lota par pani samudra mein dala, to in reality you are adding water to it. Lota par pani le gaya, to in a scientific manner of speaking, you're actually removing something. But there's just so much that it's meaningless. ऐसे ही यहाँ पर the reference here is that the one who knows Brahma, यावनार्थ उदपाने, udak is pani, sarvatra sampludodke, the one who's surrounded by water, which is the ocean, tavan uske anusar, there you go, 3 minutes, all right. तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य. So जिसने ब्रह्म को जान लिया, विजानता अच्छी तरह से जाने, the one who has become intimately familiar. Vijanata is intimately familiar, not heard about Brahma, not sang bhajans about Brahma, not read about Brahma,
not talked a lot about Brahma, right? But has actually अच्छी तरह से experienced Brahma. Brahma is unity consciousness. Brahma means just that, really, first and foremost. The main purport of the word Brahma जो हम सुनते हैं is identifying in a unified way that I am in all and all in me. Simple as that. Just like a dreamer is able to identify with all the dream characters, thinking that all the dream characters are in me and I am in all the dream characters, right? Just as the ocean is able to identify समझे सारी लहरें जो चल रही है, समुद्र कहे कि I, the ocean, am in every single wave. I alone exist. And every single wave is in me. There is no difference. There are not two. Right? The appearances of many. The waves are many, the dream characters are many. But in truth, in reality, एक ही है. एको हम बहुश्याम. वेदों में विष्णु पुराण में आता है. भगवान की जब प्रेरणा हुई तो उन्होंने देखकर कहा कि अब I'm stuck here, I'm alone. अकेला तो भाता नहीं है ना किसी को. तो loneliness, एको अहम, I am alone, I am by myself. बहुश्याम है, may I become the many. This is quoted in विष्णु पुराण. नारायण भगवान कहते हैं. And so जहाँ जहाँ उनकी नज़र गई ऐसा बड़ा सुंदर प्रभावशाली वर्णन है. His sight, संप्रेक्षण शक्ति कहते हैं. गुरु जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो वो एक एक को जाकर के स्पर्श नहीं कर पाते. इतने हजारों लोग है ना. एक एक के कान में फूंक नहीं सकते नेसेसरली. तो जो पावरफुल गुरु होते हैं, शक्तिमान, वो संप्रेक्षण शक्ति मतलब प्रोजेक्टिंग. संप्रेक्षण मीन्स प्रोजेक्टिंग. Through their eyesight, they're able to project what they have, the goodness in them, the power in them, the force in them, the positivity in them, they're able to project. जहाँ भी उनके हर एक की अपनी अपनी रेंज होती होगी शायद, depending on the tapasya, depending on the purity, depending on the authenticity. So, and when we talk about God, Narayan, तो as he moved around, बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन है विष्णु पुराण में, रोंगटे खड़े कर देने वाला, right? The hair will stand. It is so awesomely described that जैसे जैसे उनकी नजर गई, वैसे वैसे सृष्टि निर्माण होती गई. That it just came to life because of his samprekshan shakti dwara, because he is the source of life. He, she, it, right? However you want to, whichever noun, pronoun what you want to use. So, and he is always in his own original consciousness. I'm trying to remember a word that's used. Nijamurti is the word that comes, which is like still in his original form. Even though the one became the many that are sitting here, even the one never forgot that it's all me. It's only one, and that's all me, right? Him. But the many never realize that they are not many; they're still the one, and therefore are trying to expand, constantly trying to expand, trying to get more and keep more. Yoga kshemam vahamyaham. नवे अध्याय में राज विद्या राज को ये योग में भगवान कहते हैं कि जो अनन्यस चिंतयन्तो माम, अभी भजन की बात चली, कीर्तन हरे कृष्ण स्पेशली, राइट. वो कहते हैं कि नवे अध्याय में राज गुह्य कहते हैं. दिस इज द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स. किंग ऑफ मिस्ट्री इज द टर्म यूज. राज विद्या राज गुह्य, किंग ऑफ नोइंग एवरीथिंग एंड किंग ऑफ मिस्ट्रीज. उनमें से एक श्लोक है अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो अन्य में जो अनन्य है. यहाँ अन्य है ना, in the many, अन्य, not the many, the one who contemplates, the one who is able to see and think about me constantly, about the one in the many. So, एक खाली भक्ति मार्ग की ऐसी बात नहीं, खाली भगतड़ों की बात नहीं. It's a very technical, very scientific, very logical, very rational. Ananyas chintayanto mam. Inside, ruminating, contemplating, mam is me, भगवान कहते हैं अपने लिए. अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते. इस प्रकार जो जन, people, those folks, मेरी उपासना करते हैं. उपासना तो हम कहते हैं दिए जलाए, गंध लगाए, इस उंगली से लगाए, फूल करे, किस दिन क्या पहना, ये सारी उपासना है. लेकिन एक उपासना, ऊंची उपासना ऐसी कि सब में उसको देखना है ना. सबसे ऊंची उपासना की भागवत में भी उद्धव के लिए भी कहते हैं कृष्ण भगवान, ये जना परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, to those who are thus established in me. The whole time
looking at me, listening to me, serving me, in other words, in all the forms. Yoga kshemam vahamyaham. उनको जो जरूरत है, whatever they lack, whatever their needs are, I bring those to them. And उनके जो जरूरी टिकना जितना जरूरी है, योग is प्राप्ति, right? हम लोग कहते हैं योग ईश्वर के साथ, ईश्वर की प्राप्ति, और क्षेम is रख पाना, so obtaining and sustaining, to receive and to be able to keep it. वहाँ में I make sure, he says, if you are situated in him, then he takes care of you. Because that you're established in the ultimate purpose of this life, which was not to get this and this and that, and then how am I going to keep it? I want insurance for this, insurance for that, because I don't want this, that. इसमें जीवन चला जाएगा, और जो मेन उद्देश्य था ब्रह्म प्राप्ति का, वो रह जाएगा. इसलिए भगवान जब देखते कि कोई एक ऐसा है जो उसमें लगा है और अथवा लगी है, जो मुख्य उद्देश्य था, तो भगवान कहते हैं, this one I am going to protect and I am going to guard. I will make sure that she or he has what they need and that they're able to keep what it is. So it is a matter of choice. Where do we want to put our limited consciousness? No, this is just a reminder कि इसमें जो प्राप्ति में लगाना है, प्राप्ति करने में, अथवा जो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, बड़ी सूक्ष्म बात है. And this is a good moment. संध्या की बेला है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4 ब्रह्म मुहूर्तों में से, है ना. This is one of the 4 very auspicious times of the day. जब सूर्य होराइजन की ओर चल रहा है, दोनों संध्या इस बांधना, संधन करना इस बांधना, दिन और रात के बीच का जो समय जिसे बांधा जा रहा है, एक सुबह का होता है जैसे, है ना, मिडनाइट का होता है और नून का होता है, when there is transition happening. So this is a very good time, this is a very good occasion, and also a very good knowledge to pick up upon. So नित्य प्राप्त है, ध्यान रहे, है ना. There is something that's always there with us, the life force, the one, when we realize that, and the unity of it, and the oneness of it, the fact that it is the same, not similar, right? It's not जैसा मुझ में भगवान है वैसा ही तुम में भी भगवान है, ऐसी बात नहीं है. जो भगवान उसमें वो ही भगवान तुम में है, अलग अलग सिमिलर नहीं है, सेम है ना. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. सो उसके लिए फिर भगवान कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप होगा, होता ही है, ओके ही रहेगा, प्रतिज्ञा अगर भगवान की है तो. एंड ये तो एकदम इन द मिडल ऑफ भगवद गीता है, 9th चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड. जैसे मैं कहता हूँ, अगर हार पहनाया गुरु माँ को, तो एक इधर से चलेगा और एक इधर से चलेगा, और बीच में मेन लगाएंगे ना बड़ा गुच्छा कुछ, लाइक अट्रैक्टिव होगा, जो ध्यान खींच लेगा, पेंडेंट जो होता है ना, ऐसे. these are one of the pendant shlokas in the Gita, the one that I just said. The real one comes later in the 9th chapter, some other day, but it's an important one. It's a forceful shlok to get us to think कि नित्य प्राप्ति की ओर अगर ध्यान नहीं, और जो अप्राप्त है उसके पीछे चल पड़े, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय चला जाएगा, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मेन बात बहुत जीवन देना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत सारा कम रह जाएगा फिर. और जो प्राप्त किया है वो फिर से भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से अप्राप्त हो जाएगा. कौन सी वस्तु, विच ऑब्जेक्ट हैव यू बीन एबल टू कीप इंटैक्ट एज इज, इंक्लूडिंग द बॉडी, राइट, द वन दैट वी थिंक वी आर, राइट, नेवर. Not the objects, not the house, not the car, not the body, not the hair, not the voice, nothing, है ना. So जितना आवश्यक है उतना जरूर करे, धर्म के अनुसार जितना जरूरी है उतना जरूर करे. कहीं भगवद गीता में भगवान ने कहीं काटा नहीं है गृहस्थ के लिए कि इतना न करे, जितना जरूरी है जरूर करे. इनफैक्ट करने के लिए कहा. इनफैक्ट द गीता was started and spoken because Arjun was confused and he said, I don't need the kingdom, I don't need to be a prince, I will go back and live in the forest. And he said, no, you got to do this. Do you must, right? But only that which is right and only as much as is necessary. But be aware, conscious, like let the flashlight be on, that this is not the end all and be all, that there is a bigger purpose in life that I must focus on. तो again, नित्य प्राप्त जो है, अंदर जो चमक रहा है, जिस ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है, right?
उसकी ओर अवश्य ध्यान हो, पहली ध्यान हो। और खाली मुझ में, मेरी ओर नहीं, तुम में भी जो है, अगर मैं अपने लिए कहूँ तो हर हृदय में जो ज्योति जल रही है उसकी ओर ध्यान दे, और प्रकाश में वो एक, ऑल ऑफ इट, दैट इज यूनिटी कॉन्शियसनेस। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा, नथनी दीनी यार ने, ना सुना होगा, सिमरत बारंबार, नाक दियो करतार ने उसको दियो विसार, है ना। वो इतने बड़े गहने अच्छे दिए तो मेरे यार की सबको दिखा रही है कि देख कितना फर्स्ट क्लास है, कैसा ड्रेस है, कैसा वैलेंटाइंस का रोज है, इधर हनीमून का जाना है, ऐसा है, हाउ मच ही लव्स मी और शी लव्स मी, कॉन्स्टेंटली शेयरिंग। नथनी दीनी यार ने, नथनी नोज में जो पहनते, तो सिमरत बारंबार, अपने यार का, अपने प्रियतम की बार बार करे। बहन नाक दियो करतार ने उसको दियो विसार। You never even thought about the one who gave you the nose, right? तो पहली उसकी ओर ध्यान दे। ऐसे ही कह रहा है, नित्य प्राप्त जो है उसकी ओर पहले ध्यान हो, ज्यादा ध्यान हो, हमेशा ध्यान हो, मुख्य ध्यान हो, और फिर ऊपर ऊपर जो भी है क्रियाकलाप उतने जरूरी है ना। तो नहीं तो फिर वो तुलसीदास जी ने कहा कि कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, रीजे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे बोले, है ना। सॉल ट्रांसलेट दैट, कुत्ते की कबीर जी ने कहा ये भी ना, तो कबीरा कुत्ते की दोस्ती, व्हेन यू बी फ्रेंड डॉग, दो बाजू जंजाल, दिस लाइक बोथ साइड देयर इज अ प्रॉब्लम। रीजे तो मुंह चाटे, if he likes you, he's gonna lick your face. God, that's gross, right? Don't do that. और खींचे, अगर दिमाग उसका खराब हो गया तो पैर काटे, it's gonna bite you on your feet. So like you doomed if you do, doomed if you don't, sort of. So अगर नित्य प्राप्ति की ओर, जो करतार की ओर ध्यान न हो, खाली यार की ओर ही ध्यान हो, तो फिर दोनों बाजू जंजाल है। So इसलिए फिर तुलसीदास का नाम दिया। तो आई थिंक should give credit where credit is due. These two were कबीर जी दोहे। तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही। It's a wonderful shloka. It's one that I was when I began my spiritual journey. This was the hook for me. This shlok completely pulled me in and drew me in and kept me going after it again and again. What is this? Because I was also in the corporate world and climbing the ladder and all of that. And I also wanted more and more and flashier and bigger and this and that. And I came to a screeching halt. I was literally I was driving my Volvo at the time and I was listening to this and I felt like pulling over. Like, what is this that I'm hearing? And मैंने अपने गुरु के सत्संग में ये श्लोक सुना था कि तुलसी जग में यूं रहो। ये तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार रहे। It's very humbling, very soothing, very healing, very beautiful, very enlightening श्लोक। इस प्रकार रहे जो रसना मुख माही। रसना जिह्वा, टंग, मुख में जैसे रहती है ना, कैसे रहती है। दो लक्षण है टंग के। एक तो इधर 32 राक्षस है ना, इधर 16 है, ऊपर 16 है, लेकिन कभी काटी नहीं है। वो अपना काम फर्स्ट क्लास करे, बिल्कुल कभी नहीं चुक रही है। इधर से इधर ले जाए, इधर से इधर से बाहर ले जाए, बाहर आके अंदर ले ले, कंटिन्यूसली वर्किंग। राइट नाउ इट्स शी इज वर्किंग, यू सी दैट। लेकिन इनसे बच कर रह रही है ना। हम्बल तो है, काम तो कर रही है, लेकिन सावधान भी है अपने जीवन में, सतर्क है, सावधान है, काटी नहीं जा रही है। लेकिन उससे भी, और उसके आगे कहा खाती घी और तेल अनित, फिर भी चिकनी नहीं। वो तो जो मैंने सत्संग सुना था उसमें कहते हैं कि थोड़ा तेल लगाते हैं हम लोग जो भी, तो कितना साबुन लगाना पड़ता है, कितना शैम्पू लगाना पड़ता है, कितना धोना पड़ता है वो क्रीम उतारने के लिए, मेकअप उतारने के लिए, बार बार अलग अलग के वो ककम्बर का जूस, एवोकाडो के पील्स, ऑल ऑफ दोज, राइट। आई मीन ये जितने जो भी हंस रहे ये सब के सब ये कर चुके हैं, इसलिए हंस रहे हैं। और जो दूसरे हंस रहे वो कह रहे कि आई नो, आई ऑलवेज वंडर्ड अबाउट इट करके, लाइक नहीं निकला, थक के सो जाती है, देखेंगे सुबह देखेंगे, देखो, लाइक सो यू आर नॉट द ओनली वन, all of you all, right? So इस सब करके इतने धंधे करके निकालना पड़ता है। लेकिन कितने तेल खाया आज तक इसने, कितना घी खाया, कब when do you remember कि साबुन से घसा इसको चिकने निकालने के लिए? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसका कारण है बड़ा सुंदर, बड़ा गहन, बड़ा वंडरफुल कारण है, क्योंकि उसको अपना रस है। ध्यान दे, इट्स ऑलवेज मॉइस्ट।
So जो भी आया वो धकेलते जा रही है, right? Because it's inside, it's connected through the conduit, through the source of fluids in the body. If you're hydrated, it is connected inside, constantly bringing out moisture and giving out moisture. Therefore, it's constantly being washed away. अंदर चिपकने का प्रश्न ही नहीं, जो भी उस पर चिपका layer of moisture is constantly. So इसका अपना भीतर का रस है, तो इसको बाहर से साबुन लगाने की जरूरत नहीं है. एक तो देने का काम कर रही है, इट्स कॉन्स्टेंटली पुशिंग आउट, और अपना खुद का रस है, लेने का नहीं कर रही है. जो भी डालते हैं इसके ऊपर वो अंदर सक नहीं कर लेती, just takes and passes it on, right? That's all it's doing. So जो देने का काम कर रहा है, क्योंकि वैसा वही करेगा जिसका अपने अंदर से कंटेंटमेंट है, समाधान है, संतोष है, शांति है. ध्यान में आ गया है कि यार अभी बहुत हो गया, कमाना, मिलाना, मांगना, छोड़ना, बैग, बारो, स्टील. Now is not, it's enough is enough. I must now remain content in what I already have. और तो फिर देखे कोई साबुन कोई किसी की जरूरत नहीं. It's just you'll be the most beautiful person on the planet, guaranteed, guaranteed. There'll be no one more beautiful. I challenge you to try doing that. कि अपने अंदर के रस को अगर बाहर देने का अगर प्रयास हो जाए तो, है ना, ये वो वाइब्रेंटली. अच्छा खाना देख के मुंह में पानी आ जाता है, so is it the tongue or is it the mind? Mind. Brings you, मुंह में पानी आ गया. So who brings that? The tongue or my mind? But or my thoughts? the thoughts तो माइंड में, लेकिन पानी तो जीवा में है ना. पानी तो कहीं से एकदम फॉर्म नहीं हो गया. पानी इज ऑफ कोर्स अनजीवा. माइंड ने कहा है कि अब आने का समय आ रहा है. अभी conditioning. Yeah. So who is working over there? Start the conditioning, right? Because it's now I'm about to receive you. Mind is telling the tongue that something is going to come, so bring your, Tongue has to work. get your fluid ready. Right. But the tongue is not excited or like ना कि करेला भी दिया तो भी ऐसे ही अपना काम वैसा ही करेगी उतना ही. So then आज तो पानी नहीं आता हूँ मैं. काम तो करेगा. I know. So तुलसी जग में यूं रहो, बड़ा सुंदर उपदेश है संत प्रवर का. इस प्रकार जग में रहे कि हमारी और कितनी भी अट्रैक्टिव, कितनी भी इम्प्रेसिव बातें चल रही हो, कैसे भी हो, फिर भी I don't want my mind to be attracted and impressed and hooked onto something. I want to remain in my original form. I just want to perform my duty. तुलसी जग में यूं रहो जो रसना. So this is a practical advice. जग में ऐसा रहे. Every day, with every person, in every situation, in every circumstance, this is how my setting ought to be. जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही. ये था तुलसीदास जी का. और कबीर जी के दूसरे दो सुने. कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दो बाजू जंजाल, संभाल के रहना. रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे. उससे तो न हो ना. The dog owners, pet owners, like nothing against those, but just as an example. अभी तो एक भी श्लोक नहीं हुआ, कैसे करें? शुरुआत ही नहीं हुआ आज के सेशन की. So anyway, maybe we'll do one and then call it off. The last श्लोक was यावनार्थ उदप्पा ने. समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना भी ले, लोटे भर के लाओ, अपने घर से भी लाओ, उसका लेकिन उसको ही दो फिर भी नहीं होगा. So well, the point of that was, that's where we want to focus on. That's what all the sadhana, all the kirtan, all the pranayam, all the darshan, all the prasad, all the journeys and the tirtha yatras and all the gurus and all the mantras, the chanting, the shastra, all have to ultimately culminate to that realization of unity consciousness. That there is nothing and no one different from me. मैं ही हूँ. फिर जाकर सारी घृणा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सारी अपने आप छूट जाएगी. अपने आप से कौन लोभ करेगा? अपने आप से कौन चुरा के बाजू रखेगा? अपने आप से कौन कैसा क्रोध करेगा? अपने आप से कैसा, है ना? So जो अगर मैं ही सब में हूँ तो, so that consciously take our mind in all sadhana towards that. Samudra ki nahi. So the next shlok, which is today's first shlok, probably today's also last shlok, is the most famous shlok in the Bhagavad Gita that practically every Hindu has heard at some point, thanks to B.R. Chopra. कर्मण्येव हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु अकर्मणि. वो टाइटल में आता था ना, कर्मण्येव हि अधिकारस्ते, राइट? सो तो
it's a very central, very pivotal, very gripping श्लोक. Unfortunately, इतने बार सुना जाता है कि वो भी gloss over it, कि वो श्लोक तो पढ़ा है, वो श्लोक तो सुना है, जानते हैं कर्म करना है, फल किया, अपेक्षा नहीं करनी, चलो आगे next है ना करके. But if we really fully properly understood this, then I think it's likely that we don't have to go any further. So पहले हिंदी में translate maybe थोड़ा अंग्रेजी में, and then take a couple of examples and then conclude. कर्मणि एव ही, right? इसको अगर break down करें संस्कृत में, कर्मणि is in performing, एव is only, and he is emphasis, only in doing, only in performing. Your karma, जो भी क्रिया है सामने, अधिकार अस्ते, you have control over. You only have control, influence over performing your job, your duty, your responsibility. Ma phaleshu kadachana, not ever, never do you have any control, not right. So I don't want to take 1 minute. This is, in my observation, in my experience, is the most misunderstood श्लोक in the Gita. सबसे ज़्यादा misunderstanding लेकर, क्योंकि वो अधिकार शब्द, so Madhvi has heard this before in the last session in Philadelphia. I did a big rant about this. So if you want to like maybe look around, like want to admire their home. अधिकार शब्द को ज़्यादातर लोगों ने सबने ले लिया कि हक है ना, and that is the source of the misunderstanding. It's my right. What do you mean I don't have a right over the fruit of my labor? That doesn't make any sense. Adhikar has never come into being as right. It has always meant control. अधिकारी जो शब्द कहते हैं अंग्रेजी में, मिनिस्टर्स को कहते हैं ना अधिकारी, वित्त अधिकारी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन अधिकारी, इनके डोमेन में वो बात है, इनके कंट्रोल में बात है. वित्त अधिकारी मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर. Finance minister doesn't mean that he has a right over the wealth of the country, right? तो गड़बड़ हो जाएगी कि अगर he has right over all the wealth of the country. He has control of the finances of the country. He has domain over. He has governance. He provides governance over it, right? तो कर्मणेव ही अधिकारस्ते. You can decide whether you want to do this or not. You can decide whether you want to go for this satsang or not, or whatever else, to find another job or not, or go to India, get engaged, whatever. Those are your choices. You certainly have choice of that. What happens next, you do not have any choice about or control over. Why is that? Is very eloquently, very perfectly explained in the Gita, except it's in the 18th chapter. And it's just like perfect, flawlessly explained. I might, maybe in the next session, I might just allude to that a little bit, like what is that in the 18th chapter. So, karmani eva hi adhikaraste. You only can control whether or not you want to do this, your choices, but never on the outcome. How will exactly then, what will happen? How? You don't control. Ma karma phala heturbhur. Therefore, Arjun, don't put your mind on the outcome of it, because it is useless, it's futile. इससे कोई मतलब नहीं होगा. And you wasted energy, wasted time, wasted emotions हो जाएगी कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बीच में जिएंगे या मरेंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, मानना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा. You don't know that right now. You can control whether you want to fight this war today or not. In the war, how will it exactly proceed? Like, let's take a Super Bowl. Now you can generally guess कौन जीतेगा कैसे नहीं, but there have been many surprises and upsets, right? So ऐसी कोई क्रिकेट की मैच ले लो अभी, ऑस्ट्रेलिया जो भी सीरीज चल रही थी. So अथवा तो जीवन में देखो, हाँ, if you look back, and so many things, incidents that happen in our life, whether we were in Russia or the accident or what have you, right? We didn't know starting out कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन कैसी बातें हुई उसके बाद में. तो essentially the emphasis is that it doesn't make sense. It is foolish to put all your energy, mindset on what will the outcome be. It is best, it is smartest, it is wise to put your energy on whether or not to do this. And if you decide to do it, how can you do it in the best possible manner? If it is worth doing, it is worth doing it well, right? Do what you do first class, always first class, not second class, never third class. No?
So कर्मणेव ही अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इसलिए फिर, because you don't have control, मा कर्म फल हेतुर्भुर. Don't make the outcome the purpose of what you're doing. हेतु, किस हेतु से, किस प्रयोजन से, what's the point, what's the purpose, that should not be what the result of it is. Lekin, and this is a very, very important part, the last part of this shlok, ma karma phala heturbhur ma te sangostva akarmani. But you also don't want to attach too much to not doing, inaction. You don't want to throw the baby with the bathwater, in other words. Because you don't control the outcome, you don't want to say, then what's what doing? I don't want to do it in the first place. If I don't know what the outcome is, if I cannot control the outcome, then I'm just not going to do it. Not do it is not right either. Akarmani. Ma te sangos, ma is don't. Te, like that. Sangha is attached or associate with akarmani, not doing. Therefore, do you must, but do for the sake of doing, realizing that you have a control over what to do and how to do. Never ever on what happens. You can influence what happens based on your choices and how well you do. You have some, in the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, it says you have maximum 20% control. 1/5 control. If you flawlessly did, if you were the best performer of that, whatever that task is, and you did your exact perfect, then you can probably guarantee maximum 20% chance of success. You can never say that I think 50-50, 80-20, maybe Pareto's law, maybe, I don't know, I'm 99% sure. Not so. God says no, ever. Because there are 4 other factors always at play. You are one of the 5. The doer, the performer, is one of the 5. There are 4 other unseen, unknown factors that are also in everything that you do. Is always, and so if you divide 100 by 5, it's 20% essentially. So release yourself from that stress, the tension, the pressure. कि ये होना ही चाहिए, होके रहेगा, ठीक ही होना चाहिए. You don't control it. है ना? So इसलिए कर्म पर ध्यान हो, कर्म के फल पर नहीं. So कर्मणेव ही अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर mate sangostu akarmani. Does that make sense? Do you follow, in other words? So the key to remember, and this is adhikar was never meant and does not mean primarily you're right. That's where the misunderstanding happens. That's the first place. It has always meant, and it has always been suggested, that your control, your domain, your influence. So karma par hi hai, karma ke phal par koi haq nahi hai. ऐसा जो फटाक से कह देते हैं, वो ध्यान देना चाहिए. हक in the sense of you just don't control it. It's not the right. And the second part is कि therefore don't run away from doing your duties. You still have to perform your duties, but just be smart about it, wise about it. और डेग रहकर टेक कर उसको तो almost कान पकड़ के जैसे खींच के लाया ना अर्जुन को कि no, you got to fight even if you die. You don't want to run away. So I will pause there. Did we do okay on time? Yeah, we're almost there. 6:30. So okay. take 5 more minutes. So then, okay. That's it. कर्म अधिकार तो है, no question about it. But karma is duty also. It's your right to Yeah. one thing, but at the same time it's duty also Yeah. you have to perform. Yeah. So maybe in the remaining 4.5 minutes, since the host has granted me the time, I'll quickly finish the thought जो मैंने कहा था 18वें अध्याय में जो बात आती है. So the 14th, if whoever is interested, the 14th shlok in the 18th chapter, 18-14, थोड़ा क्लिष्ट है, complicated है, इतना obvious नहीं है. In fact, one of the least obvious है. It's the easiest passed over shlok. People just run quickly through it. Well, okay, that's fine. But that's where you got to stop and understand it, because that is where it is really unpeeled and explained properly. That shlok is adhishthanam tatha karta karanam cha pruthak vidam vividhascha pruthak cheshta chaiva daivat daiva chaivatra panchamam. So adhishthan
See, essentially in this, because it will take years, I figured I'll mention that. 14th shlok in the 18th chapter, it says there are 5 factors in anything that's happening. Karta is one of them. Karta is us, the doer, the performer. And therefore, in the 2nd chapter, I said, because you're only one of the 5, don't get too attached to it. Don't flatter ourselves too much. Oh, I did my best, therefore this is going to happen, all that. Not so. Adhishtan is one of them. Like, what is the natural law? What is the purpose? That it is grounded in? And a quick example is if you wanted to take a refrigerator. I'm sticking with the same example the last time. I know I'm boring you. If you wanted to take a refrigerator, यहाँ से अगर दरवाजे से अंदर आया नया, अगर नीचे ले जाना हो बेसमेंट में वर्सेस ऊपर ले जाना हो, so उतना ही पहलवान आदमी है, लेकिन if it is being taken down, अधिष्ठान उसका gravity है ना, दोनों का अधिष्ठान gravity है. So depending on where you're taking, because of the adhishtan, the purpose, it's going to be a very different experience for the mover, right? Right? इसको तो कारपेट पे रख के सीधा नीचे घसर देगा, वो कारपेट से बिंदास चला जाएगा, और ऊपर उठाने के ले जाने का कहा तो है ना. So it's not about the performer only. कितने भी पहलवान आदमी को ला, उसका what is the natural law unseen? You don't see gravity, but it is at play, है ना? That is going to come to play. So just as a quick example, but it also means the purpose. What was the intention? What is the purpose that you are doing it with? Because there are other people who also have a stake in that. There are many stakeholders. जैसे project team होती है, अथवा we try to make mergers and acquisitions, whatever. You may give your best, but there may be other parties that are also hostile mergers that are interested in. So because they have different purposes, when the purpose is not aligned, the doer may be first class, maybe the smartest, but it will still fail, and it does fail because the purpose was not aligned. Does that make sense? Right? Or physical law ka jo, that is adhishtan, tatha karta. Karta is the doer. So even in the doer, how skilled the doer is, how focused the doer is. Did you have good night's sleep last night? How aggravated it is. What is happening in your life? There's something really horrible happened in India, or is like had someone in your family been hospitalized, or do you have a job? Have you lost your job? There are 1,000 things about the performer that we have no idea, and how competent they are, how committed they are. Is their heart into doing what they're doing? Is this what they want to do? There are so many factors in the karta that are also at play. You might say this is like LeBron, just such an awesome player, but how come they still lost? You don't know what else is going on with the karta, right? So you don't want to automatically assume. और कम से कम अपने लिए तो इतना पक्का ध्यान में रखे, है ना. So अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम. Karan is appliances, equipment, tools. हाँ? अधिष्ठान is the. मैंने कहा 100% कर्ता नहीं कर सकता. 5 So कितना भी अच्छा किया, अगर बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत स्किल्ड है, परफेक्टेड है, नींद भी भरपूर फर्स्ट क्लास हुई है, वो एक ही काम पे फोकस्ड है, सारा हृदय लगा के मन लगा के कर रहा है, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दिस टू मी फॉर मी टू डू, इसलिए आई एम लाइक कंप्लीटली एज गुड एज इट कैन बी डन एंड आई एम द मोस्ट स्किल्ड इन इट. उतना करके भी लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी ने अंदर रेफ्रिजरेटर लाया and he's performing it really well. He's muscular, has slept, all that. But it depends also on, are you asking him to take the refrigerator up or down? Because usme adhishtan is gravity, gurutvaakarshan shakti. That is going to play exact opposite role. नीचे ले जाने के लिए बड़ा आसान हो सकता है उसी को, और ऊपर ले जाने उठाने के लिए वही बात उतने ही करता तो वैसा का वैसा सेम करता है, लेकिन अभी वो एकदम उसकी उल्टी बात होगी. ऐसे ही इंटेंशन जो है, ये तो फिजिकल एग्जांपल दिया मैंने, बट द टेंजिबल बात हो तो उसमें व्हाट वाज योर पर्पस, व्हाट वाज योर इंटेंशन, वाज इट अलाइंड विद द, आई विल इवन से व्हाट इज अलाइंड विद द यूनिवर्स, इज दिस फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन. अल्टीमेटली भगवान अगर भगवान है तो आगे एक बीच में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द वेल विशर ऑफ ऑल, आई डोंट डू एनीथिंग दैट इज नॉट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल. अगर दुर्योधन को मारा, अगर रावण को मारा, सब का भला था इंक्लूडिंग रावण का और दुर्योधन का, इसलिए तब मारा, है ना. अगर कुछ हो रहा है हमारे साथ, भगवान को अगर दोष देना है तो इतनी बात पहले इतना समझ ले कि कुछ अच्छा है इसलिए वो हो रहा है.
अगर भगवान है उसमें तो, है ना. लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड में what was your intention, what was your purpose, and does someone else has an exact opposite purpose of that, है ना. किसी को कंपनी बेचनी है लेकिन शेयर होल्डर्स को नहीं बेचनी है, अथवा शेयर होल्डर को बेचनी है और सीईओ को नहीं बेचनी है. आर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटेंशन ऑफ द पर्पस? एंड देयर यूजुअली आर. छोटी छोटी टीम में 3% टीम में भी आ जाते हैं, राइट. लाइक प्रोजेक्ट्स फेल most often because the team members are not aligned. The most common reason, I don't know if there's any PMI, project manager, you'll know that they fail mostly because the teams are not aligned and their hearts not are together in it. तो वो अधिष्ठान हुआ. अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ. 18 years later when we are in the 18th chapter, I promise you, I will devote the whole session. And क्योंकि अभी तो this is our 3rd year. Look at our tortoise pace, and we're in the 2nd chapter. So, right? Yeah, I mean. यहाँ तक आने में कितना साल लग गया? तीसरा साल है ना भैया. हाँ, है ना. तो everybody was talking about the anniversary. We should celebrate the anniversary. So now 18 more years. No, what I was saying, like, we will take more time, but I want to be respectful of these two gentlemen. I want to be welcome for 18 more years. So इसलिए I'm being mindful. जीतू भाई ये 18 चैप्टर के बाद फिर शुरू करना पड़ेगा. इतना डीप है. अधिष्ठानम तथा कर्ता. कर्ता क्यों क्या है? वो दूसरे अध्याय में जहाँ पर हम थे थोड़े समय पहले कह रहे थे कि तू करता तो है लेकिन तेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, और लोग और बातें भी है. तो ये 5 बातें यहाँ पर रहस्य. अधिष्ठानम तथा कर्ता. तीसरी बात है करण, विच इज वेयर आई वाज. करण इज द इक्विपमेंट, अप्लायंस, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स. हाउ गुड दे वर. वो तो सब ठीक था लेकिन उसकी डाली अगर टूट गई उस समय पे तो धड़ाक से. अभी Boeing 737 whatever, right? Like the pilot was good. I'm sure everything was perfect, I'm imagining, but the equipment failed. And so who would have known? Who can blame the pilot? करता है कि उसने नहीं सब किया. No one can blame the pilot, right? उसके intention, the gravity was the same. Gravity's equation never changes. Right? Go back to physics. Fundamental is the exact same constant. Gravity is called a constant because it is always a constant, है ना. तो पायलट भी ठीक था, ग्रेविटी ठीक, लेकिन फिर भी प्लेन गिर गया बिकॉज पॉसिबली करण में होगा. तो भगवान कह रहे हैं उन लोगों के रिलेटिव्स को कि तुमने इनको बिठा तो दिया. द इंडियन फैमिली दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो, यू डिड योर पार्ट, यू डोंट नो व्हाट द आउटकम विल बी. It's not your fault. Don't kick yourself कि I was such a bad mother or father that I bought the ticket, I put them on the plane, I dropped them off, I insisted that you go see the safari in Africa or whatever the story was, right? Don't kick yourself that much because you are maybe a 1/5 responsible for it. In that example, it was the Karana that failed. है ना. उल्टा भी होता है कि सब उल्टा पुल्टा गया था लेकिन the equipment was first class and somehow patched together. Usually they show in action movies that somehow the car or the plane or the helicopter, like Mission Impossible, right? It works out wonderfully. लेकिन कभी कभी ऐसे वैसे भी करण के कारण काम ठीक भी हो सकता है. That the tool was so good. So अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम. These are different. पृथग्विदम is these are independent. पृथग्विदम is they don't necessarily, one doesn't control the other. It's like the Marvel comics, 5 superheroes. They all have their own powers. They will do their own thing. That's here. Vividascha prathak cheshta is process. Very relevant to the modern age. Was there a process? Was there a system? Was the process followed? Was the process followed correctly? Were you driving on the wrong side? The car was first class. The driver is good. The gravity is working its well. But were you following the law of the land? कि इंडिया से आया तो इधर से चलाने लग गए तो फिर भी क्रैश होने वाला है ना. So and then also is the process right? Not about whether you are following the process. Whether you are following the process is about the karta. Karta was deficient if the karta was not following the process. But is the process even right? Is the design thoughtful? Is the system properly linked and working? Right? That's cheshta. And in the 5th, daiva, the unknown. Right? There's a 5th in beyond these 4. There is something else still that you don't know, the forces of nature. सब ठीक हुआ लेकिन कहाँ से हरिकेन आ गया,
Right? Florida, everything was following the process. American transportation system perfectly designed, all that. But there was a hurricane that just picked up my whole car with me and blew me off. Act of God. Act of God, exactly right. Bingo. That is precisely it. You know? Act of God. I mean, why am I so excited about, he said act of God? First of all, it's about God. Than that. But secondly, in this, and you might know this, maybe this is what you're referring to. In all the contracts, legal contracts, there is always that act of God clause. It doesn't matter scientific ho, research ho, $1 billion contract ho, $3 contract ho, but there is always, a good lawyer will always have a clause that says, notwithstanding act of God, because there's still something. Doctors bhi kahenge, I don't know. Surgery, everything is good. The best hospital, best doctor, best appliances. Karta bhi hai, Karan bhi hai, systems bhi hai. And a good doctor will always still say, I don't know if the patient will live or not. Right? Why? Because there's that daiva. आइन वक्त पे और कुछ हो गया, उस पता नहीं था, लेकिन उसी समय डायबिटीज होना था या कुछ. Like one of my friend's father died on an operation table. It's a shame because the whole family was doctors. The patient himself was the dean of a medical college. Everything was good. It was just a normal kidney-related surgery. But at the time, I am forgetting, liver, something failed. He had a heart attack on the operation, Satyajit. I mean, anybody can have a heart attack and at any time, but it had to be like while the operation was going. And everything was in place, but वो हो गया जैसे. So इसलिए और उल्टा भी हो सकता है. Again, I don't mean to be negative about this. I must remind you कि उल्टा भी, it can actually work out in your favor also. कि lottery जब लगती है तो कर्ता की कौन सी इतनी competency होती है, right? Whoever wins the lottery ticket, system वो तो same है, सब ने same. I promise I'll end with this example. That सभी लॉटरी टिकट एग्जैक्ट सिस्टम फॉलोड है, वो बॉल भी वही है, करता भी की कोई विशेष कॉम्पिटेंसी नहीं है. इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. व्हाट आर यू गोइंग टू डू एज मच एज पॉसिबल. सब ठीक है, एक उतने ही डॉलर दिए, ऑल कंसिस्टेंट, एंड समवन गॉट द जैकपॉट. राइट? सो इट वर्क्स इन फेवर आल्सो. पॉजिटिव भी होते हैं, एक्सीडेंट से बच भी जाते हैं. आई हैव, राइट? आई कैन कंप्लीटली टेल यू दैट देयर इज नो वे. Like I've in some certain instances, there is no way that I and others who are with me could have survived. I'll never be able to explain that. I will even say that why I know what I know about spiritual, I have no way to explain. I really don't. I'll say this is not mine. ये मेरी अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी कोई अकल नहीं है खोपड़ी में इतनी, उतनी तो सबके पास है. तो वो दैव है ना, जिसे कृपा कहते हैं. So इसलिए we will end with that, and then next time we'll pick up the rest. So चलो फिर, जय श्री कृष्ण. जय श्री राम. Good timing.